द गुड न्यूज़ इज़ कि जो स्लीपिंग टाइम है वो काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया. सो आई एम स्लीपिंग एट अराउंड 4 AM नाउ. प्रॉब्लम इज़ इन द वेकिंग टाइम क्योंकि द आइडिया इज़ कि आई विल स्लीप एट 12 PM रात में, सॉरी दोपहर में. एंड सहरी के बाद आई एम प्लानिंग कम से कम 2 घंटे की स्लीप. तो जो खाने के बाद वाली जो लंच वाली नैप होती है वो सहरी नैप बन जाएगा अब. और जो एक्चुअल मेरी रात की नींद होगी वो एक्चुअली 12 PM टू 6 PM के आसपास रखने का मैंने सोचा. तो 6 + 2 दैट्स 8 hours ऑफ स्लीप. दैट्स ऑल आई नीड. बाहर भाई बहुत ही गंदी आपको आवाज़ आ रही होगी इस वक्त. अब क्या थोड़ा सा कम हुआ तो देखो अब ये श्योर करते रहेंगे तो आई डू नॉट हैव मच टू अपडेट अपॉन यू एनी वे. एक दो दिन इसमें मेरे काफ़ी लाइक प्रोडक्टिविटी वॉज क्वाइट हिट क्योंकि मैं नींद को इस तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहा था. बट बेहतर है यार, कम से कम बिना भूख प्यास के नींद चेंज हो जाए तो आसान है, क्योंकि फिर रमज़ान के अंदर भूख प्यास वाले दिन जब चेंज करना पड़ेगा तो बहुत गंदा हिट आएगा. So that's what I am trying to do. And business wise everything is good, alhamdulillah. The things that I'm doing, they're working, or at least I think they're working. कल मैं ऐसे ही एक दो ट्वीट्स पढ़ रहा था एक बंदे के. तो दिस पर्सन मैनेजेस अ लॉट ऑफ मनी एंड देन ही लॉस्ट इट ऑल इन 2022 का फाइनेंशियल थोड़ा सा ब्लो अप में. देन 2023 में ही इज़ बैक अगेन. तो उसका एक ट्वीट था कि winning requires a deep seated fear that everybody is out to get you and that you will never make any more money. You may never make any more money. You need to think that everybody is trying to drink your milkshake because they are, and everything in the world is out to kill you, so act accordingly. एंड वो बहुत ही नेगेटिव मोटिवेशन था, मतलब इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव मोटिवेशन. द थिंग विद मी इज़ कि मेरे ऊपर पॉजिटिव मोटिवेशन ना ज़्यादा काम नहीं करते हैं. दैट इज़ वट आई हैव रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ. आई एम मच मोर मोटिवेटेड बाई वॉट आई डू नॉट वॉन्ट टू एंड अप लाइक और वॉट आई डू नॉट वॉन्ट देन आई एम motivated by what I want, because technically I think it's because of Muslim beliefs as well. कि I can never value the world too much. The Ferrari is good, but I cannot value it too much. If I were an atheist, I would have valued the Ferrari much more, because as a Muslim you always know कि हाँ भाई आपको मरना है. लेगेसी कोई चीज़ नहीं होती पहली बात तो मेरे हिसाब से. देर इज़ नो सच थिंग एज लेगेसी. मुग़ल बादशाह सब बना के चले गए, आज तो नाम भी हटाए जा रहे हैं. सो लेगेसी एज सच कुछ होती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. आर्ट वर्क्स आर लॉस्ट एंड इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद फेट एज वेल. कि भाई ठीक है शेक्सपियर, बट डिड ही रियली एग्जिस्ट? एंड शेक्सपियर का सारा काम इज ट्रूली हिज ओन वर्क? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव एडेड टू इट एज वेल. वेल उनको कौन कंसिडर कर रहा है हिस्ट्री के अंदर? सो उनको लोग कंसिडर भी नहीं कर रहे. तो लेगेसी इज़ नॉट सच ए थिंग. अल्लाह के सामने जवाबदेही इज़ अ थिंग इफ़ यू आर अ मुस्लिम. तो the idea of erecting or making something that outlives me, quote unquote, is not very exciting to me. Because I think the only thing that is going to outlive you will be your next generation, inshallah. And that is your legacy. Your kids somewhere down the line is your legacy. उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे नस्ल कितनी चल पाएगी. जो हम लोगों की यहाँ बात होती है यूजली मुस्लिम घरानों में नस्ल की, आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नस्ल कितनी चल पाएगी. श्योर आप अभी कर रहे हैं, लेकिन यू नो मे बी योर ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन दे ऑल एंड अप इन एन एरोस्पेस क्रैश और समथिंग, जो भी उस टाइम के हिसाब से हो रहा, एंड एवरीबडी डाइज, which is a horrible thing, and I hope that does not happen, of course, but it is a possibility. So the only thing you can do is to live this life with the expectation कि आपको खुदा को जवाब दे ही है. एंड अगर वो आपके अंदर नहीं है कि आपको खुदा की जवाब देगी, then I think you are going to indulge in all sorts of religiously unethical behavior, which of course you can, क्योंकि you're not religious, तो आपके लिए वो unethical नहीं है. But then I think that if you remove religion from the equation, तो बहुत सारी चीज़ें morality की हट जाती हैं. Then it's not good. I'm not saying that as somebody कि मैं हर चीज़ religiously ethically करता हूँ. I see myself as somebody who bends the rules all the time. But जहाँ तक बात करें positive motivation, negative motivation, कि I have a deep rooted fear, I think, of actually sitting and driving a Ferrari. And you can say कि ये cope है. Cope in the sense that I'm just trying to cope with the fact that I cannot drive a Ferrari right now. I mean I can,
and like if I go to a certain place, I know certain people who, you know, like unki Ferrari I can drive, but I do not have a Ferrari of my own. So in that sense, maybe all of this is just a coping mechanism, kahin na kahin, right? In the sense that I'm saying that I do not want to drive a Ferrari because I cannot drive a Ferrari, and if I could drive a Ferrari, then I would drive a Ferrari. But I think what I'm trying to hint at is कि even if I could drive a Ferrari, मैं अपने बारे में ये जानता हूँ कि I think the first 10 rides would be very much fun, and the 11th ride would, you know, I will return to my baseline level of happiness. So, do you invest in a Ferrari? Like, do you really need to buy a Ferrari, or do you need to buy 10 rides? Because दोनों की equation बहुत अलग है. One can get you like 10 rides of Ferrari is 10 times cheaper than actually owning a Ferrari. So, what should you be aiming for? Do you aim for experience? Do you aim for expensive experience, or do you aim for expensive things? And that's something that I often think about. तो पॉजिटिव मोटिवेशन मेरे ऊपर बहुत कम कभी कभी काम करता है. The idea of achieving a large sum of money, I think, does not work very well with me. What does work very well with me is the idea of not playing hard enough and not, you know, like being left behind, shayad, yeah, being outdone, outcompeted. I hate losing. I'm a very sore loser, I think. And I realized that 2 या 3 साल पहले. उससे पहले मुझे नहीं पता था. उससे पहले I was like, हाँ नहीं कोई बात नहीं नहीं. I think I'm a very sore loser. I do not know how to lose. And you can say that's bad. You should know how to use. You should know how to take one on the chin. I know how to take one on the chin, but I'm more interested in bouncing back after taking one on the chin. I do not like losing, and my ego will not allow me to take a loss simply. So I would much rather work my self-doubt and my self-confusion than actually accept it and try to live with it. I don't want to live with it. जो एक्चुअली मुझे लगता है थेरेपी में बहुत बार दिक्कतें आती हैं, उसी वजह से आते हैं because they teach you how to live with it. I don't want to live with it. I want to outrun this. I want to outwork this. I want this to fix itself. I want to fix it. I don't want to live with it. And if I have to take extreme measures in order to do that, so be it. That's it. I also think कहीं ना कहीं कि ये मैं कल भी बात कर रहा था कि दिस इज समथिंग आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट पब्लिकली. कुछ लोग जो मेरे आस क्लोज हैं वो बात जानते हैं कि व्हेन आई वांट टू गेट समथिंग डन, एंड आई एम सेइंग लाइक आई ओनली ट्राइड दिस 3 या 4 टाइम्स इन माई लाइफ, क्योंकि उतने डेस्परेट अटेम्प्ट्स जो आए हैं ज़िंदगी में वो 3 या 4 ही आए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि 3 या 4 ही आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि 3-4 आए भी हैं. I would say कि you need to do this within 6 months or you should kill yourself. And I know कि ये बहुत ही डार्क वीडियो हो गया एकदम से, but the idea behind that was कि until and unless मैंने अपने आप को इतना प्रेशर नहीं दिया, I didn't make it. Like उससे पहले मैं पूरी ज़िंदगी भर वो सालों साल वो करने की कोशिश करता रहा, and it did not work. But as soon as I said 6 months or you die, and I truly believed that I would kill myself, I did it in 6 days. So which one is it? Are you enabled, or are you just not motivated enough? Make the choice yourself.